चलो अपन स्टार्ट करेंगे. एनीवेज यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स हु डिडंट डन. सो फोरेंसिक ऑडिट में आई थिंक वी हैव डन अप टू yesterday also we discussed कि what are the major reasons of doing the fraud. First of all, what are the major two types of frauds you may find? FFR and MOA. What is FFR frauds? Fraudulent financial reportings. And MOA stands for misappropriation of asset. Generally, who is involved in the FFR? Top level. And who is involved in the MOA? Lower level. And let it be FFR frauds or MOA frauds, the reasons will remain same. That is called FRFs. That is called pressures, opportunities, and rationalized. I think that was the area we have done. Now, I think from this topic we have to start. Now, common areas of forensic audit. With the increase in financial fraud, popularly known as white collar crimes. What do you mean by white collar crimes? Just now I told you FFR ka another name is also known as white collar crimes. What do you mean by white collar? ये जो CEO, CFO, MDs, KMPs, when they do the fraud, we call them as what? White collar crimes. Forensic accounting and auditing has emerged as a prominent to ensure financial growth for the businesses and economies as well. Some of the common areas that are to be elected in the forensic audit are, we already know MOA. What is MOA? Misappropriation of assets. So they have used the word asset misappropriation. Then instances of what? Corruption, extortion, financial statements fraud and conflict of what? Interest. इसके ब्रैकेट में आप लिख लो related party disclosures. So the best way to do the frauds in the big size is always to be done with your related party. Because the related party में problem क्या है? You are a holding company and the other company with which you are doing the fraud is your subsidiary. So it will be very easy for you to carry out the fraud in the form of related party. So these are the major areas under which forensic auditors and forensic accountants are being hired. Read the 5 areas again. Asset misappropriation, or there are cases of corruption, extortion, financial statement fraud and conflict of interest. Hence, forensic auditing is a detailed examination of past financial records which requires the expertise of what professionals not only in accounting and auditing but also in the area of assessing legal framework and fact finding. Forensic auditor is expected to adopt a practical approach to deal with the word numerous loopholes which may arise during the investigation procedure, with the key benefits of increased credibility, expert accounting and enhanced effectiveness and accuracy. Forensic auditing is seen as one of the rapidly growing area in the detection and prevention of fraud and white collar criminal activity. देखो क्या होता है nowadays, actually let me tell you one thing, how the audit actually becomes successful in the market. Whenever the new audit comes in the market ना, it is called introduction stage. जैसे internal audit है, अगर आप carefully देखो तो 2000 से लेके 2008 and 10 till the time the India's first financial scam came into the picture, that is Satyam scam, till that time no one was ready to hire internal auditor. रीजन वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि कंपनीज क्या बोलती थी, आ तो रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाई शुड वी पे अननेसेसरी टू द विच ऑडिटर? इंटरनल. बट वंस द स्कैम्स केम इनटू द पिक्चर, फिर 2008 में सत्यम स्कैम हुआ, 2010 में ये दूसरा कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ, देन द गवर्नमेंट रियलाइज कि इंटरनल ऑडिट को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट एज अ मैंडेटरी. देयर कम्स द नीड ऑफ सेक्शन नंबर 138 which talks about the which audit? Internal audit. तो इंटरनल ऑडिट एक्चुअली लोग बहुत अवॉइड करते थे. पीपल यूज टू अवॉइड इट. दे यूज टू थिंक इट एज एन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कि व्हाई शुड वी पे मंथली सैलरी टू समवन, एनीवेज एक्सटर्नल ऑडिटर इज गोइंग टू कम एट द एंड. बट यू ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो इंटरनल ऑडिटर इमर्ज्ड एज एन एक्टिविटी which today is one of the most popular auditing field. Same is the case forensic audit. Ab I can guarantee you that before coming into the sessions of CMA final auditing classes, I think few of you might have heard about the audit called forensic audit, or I think rather none of you have heard about the word called what? Forensic audit. मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता था कि ऐसी एक फील्ड भी होती है कि where you go and carry out the financial scams. तो अभी forensic audit is also becoming like an internal audit. जैसे ही कंपनी को थोड़ा सा टेस्ट होता है कि हाँ, आई थिंक फ्रॉड्स एंड एरर्स आर हैपनिंग राइट नाउ, तो दे आर एट विच लेवल? स्मॉलर लेवल. बट आई डोंट वांट टू ग्रो देम टू बी एट व्हाट?
बिगर लेवल, तो दे फर्स्ट ओनली हायर द विच ऑडिटर, फोरेंसिक ऑडिट, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिटर ऑडिटिंग अकाउंटिंग में तो एक्सपर्ट है ही, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन व्हाट, इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी, बिकॉज ही कैन थिंक लाइक अ क्रिमिनल, बिकॉज हिज वर्क इज टू कैच द व्हाट, क्रिमिनल्स। तो उसे बोलते हैं एम्पैथेटिक बिहेवियर, मतलब स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ क्रिमिनल टू थिंक लाइक कि हाउ व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर बीइंग डन, और दैट इज द रीजन इट इज नॉट समथिंग लाइक यू चोज एंड यू कैन बिकम, इसका भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, आपको स्पेशल मॉड्यूल्स दिया था, 5 मॉड्यूल्स है इसके, आपको 5 मॉड्यूल पढ़ने हैं, 5 एग्जाम्स यू हैव टू गिव, आफ्टर दैट ओनली यू बिकम अ विच ऑडिटर, फोरेंसिक ऑडिट। ऐसे थोड़ा होता है कि चलो मन किया टैक्स ऑडिट नहीं मिल रहा, चलो फोरेंसिक ऑडिट कर लेते हैं, तो दैट इज नॉट योर विशेस एंड डायरेक्शंस, इट इज समथिंग विच इज अ वेरी क्वालिफाइड प्रोफेशन इन इटसेल्फ, और इसका मेजर फोकस होता है टू एलिमिनेट द फ्रॉड्स ऑफ विच आर बीइंग कैरिड आउट बाय व्हाइट कॉलर, क्योंकि ये छोटे मोटे फ्रॉड्स के ऊपर करते नहीं ऑडिट, वी डू द फ्रॉड्स ऑडिट विच आर रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड़, टॉप लेवल मैनेजमेंट के फ्रॉड्स में, तो स्लोली इट इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन द मार्केट। नाउ बिजनेस फ्रॉड्स, corporate fraud consists of illegal or unethical and deceptive actions committed either by the company or an individual acting in their capacity as an employee of the company. Corporate fraud schemes are oftenly extremely complicated and therefore difficult to what, identify. देखो एक बहुत सिंपल सा लैंग्वेज बताऊंगा and please let me know did you understand or not. We as an auditor go there for how much time period? चप्पल क्यों घिसा रहा है तू? So we as an auditor, when we enter into the client's place, we enter always at the end of the year. Am I correct? So imagine client has 365 days to do the fraud. Understand the time period he has. And we have only limited time of 10 to 15 days to catch it. Did you get the point? अब तुम्हें नहीं लगता कि client can also hire a chartered accountant or a cost accountant to think like a chartered accountant or a cost accountant who is going to enter after the end of the year? Yes or no? He can hire a CA or a CMA to beat the CA or a CMA who is going to come at the end of the year. So not only we are becoming clever, corporate fraudsters are also becoming what? Clever. They are also going for the new avenues of doing the what? Fraud. क्योंकि it is a evolution now. जैसे let's say for example there is one virus, उसका एंटीवायरस बन गया, फिर से एक नया वायरस, उसका एंटीवायरस, तो दैट इज व्हाई फ्रॉड्स के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो वन फ्रॉड इज गेटिंग कॉट नाउ रेगुलरली, तो दे विल थिंक ऑफ द न्यू वेज ऑफ डूइंग द फ्रॉड। दिस इज व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। नाउ सी, it often takes an office full of forensic accountants months to unravel a corporate fraud scheme in its what? Entirety. That is the reason nowhere in the whole chapter you will find that any time period is given. जैसे we know that cost auditing का time period is 180 days. ठीक है ना? Statutory audit का time period is before conducting AGM. Same way forensic audit का there is no time period, because read the last line again. If often takes an office full of forensic accountants months to unravel a corporate fraud scheme in its what? अगर आपको किसी स्कैम के इन डेप्थ में जाना है तो यू हैव टू स्पेंड मंथ्स एंड मंथ्स, और समटाइम्स इट मे टर्न इनटू व्हाट? ईयर्स। बट मेक श्योर दैट नो वन शुड नो दैट कि फोरेंसिक ऑडिट इज टेकिंग प्लेस, अदरवाइज द क्रिमिनल विल बिकम अलर्ट। तो इसलिए ये बहुत ही स्लो तरीके से किया जा सकता है। जैसे समटाइम्स पुलिस गो इन द सिविल ड्रेस टू कैच अ थीफ और नॉट, or to catch a criminal. Same is the case with that. Forensic audit is a very clever activity. You can't show to the somebody that I am a forensic auditor. क्योंकि the moment you show to the auditee कि I am the auditor, the sense of fear will automatically come, because he knows that कि you are a fault finding machine, and he will become more alert and he will not do the things for which you have been hired to detect. Are you getting the point? Next point. When the corporate fraud is perpetrated by the top executives of large corporations, the fraud often extends to billions of dollars in scale. The victims of the corporate fraud are consumers or clients or creditors or investors and what? Other businesses. And eventually the company that is a source of fraud and its employees, when it is finally discovered, the company committing the fraud is often left into ruins and forced to declare what? Bankruptcy. तो मतलब why it is very important? तो think logically. Let's say for example आपके पेरेंट्स की बात करते हैं या आपके ब्रदर सिस्टर की बात करते हैं, they are also having, you might be also having in the future demat accounts.
हम लोग क्या करते हैं अपनी स्मॉल स्मॉल लाइफ सेविंग्स को, समटाइम्स वी पुट इट इन एफडी, समटाइम्स वी पुट इट इन द स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, और सडनली आपको पता चले कि रिलायंस में फ्रॉड हो गया, and your lifetime saving of 30 to 40 lakh rupees you have invested in what? Reliance. Your total life is ruined. तो not only the company gets affected, company के साथ साथ कौन कौन affect होता है? Consumers. उनका जो trust होता है वो break हो जाता है. Next one what? Clients, creditors, lenders will not be able to get their money back. Investors won't get their money back, and other associated businesses. And ultimately, what the ultimate result of every fraud? Company is forced to declare its what? Bankruptcy. Corporate frauds consist of illegal, deceptive actions committed either by the company or an individual who is the employee of the company. Many corporate fraud schemes are highly complicated accounting schemes used to inflate the company's apparent profits and may take years to what? Detect. अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं. जो अप्रैल और मई मंथ होता है ना, दिस इज अ मंथ ऑफ रिन्यूअल्स. ये मंथ में सबसे ज्यादा रिन्यूअल्स होते हैं. एंड व्हाई दिस मंथ इज बीइंग चोजन एज अ रिन्यूअल्स? क्योंकि बैंक ऑडिट गेट्स कंप्लीटेड बाय 15th अप्रैल. कंपनी ऑडिट्स मोस्टली वेल गेट कंप्लीटेड बाय 15 मई और मई या जून में मैक्सिमम हो जाते हैं. एंड बैंक्स आर वेटिंग एंड वॉचिंग द कंपनीज प्रॉफिट सो दैट दे कैन रिन्यू द लोन्स. एंड टू रिन्यू द लोन्स, व्हाट द कंपनीज डू, दे पंप अप देयर प्रॉफिट्स विद एयर, नॉट एक्चुअल. जैसे मेरे को ये बताओ, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, विच इज द ओनली आइटम विच कम्स ट्वाइस इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इन्वेंट्री. अगर आपको आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज करने, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स? इन्वेंट्री में 2 zeros ऐड कर दो, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज एंड योर नेट प्रॉफिट ऑल्सो विल इंक्रीज. दिस इज नथिंग बट कॉल्ड सेम फ्रॉड, विंडो ड्रेसिंग. विल यू बी एबल टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स एंड बैंकर्स और नॉट टू गिव यू द मोर एंड मोर लोन्स, राइट? तो अपनी क्लास में है क्या? यू आर इन दिस क्लास ओनली? सिंस व्हेन? Since starting. तो where you used to sit? ओ इतना सा दिखता नहीं होगा. चलो next point. When massive corporate fraud is eventually discovered, it can take down even huge multinational companies with billions in annual revenues. तो कभी भी याद रख लो, बड़ी कंपनी है तो size of the fraud also will be what? Huge. Are you getting the point? जैसे नीरव मोदी ने करा 12,000. यू वॉन्ट बिलीव कॉमनवेल्थ गेम में भी कितना बड़ा स्कैम है, 83,000 करोड़. इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम हुआ था टेलीकॉम स्कैम, 1.75 लाख करोड़ का टेलीफोन स्पेक्ट्रम स्कैम. 83,000 करोड़ का स्कैम. सोचो कैसे होगा कॉमनवेल्थ गेम में. वो टिश्यू पेपर आते ना, $20 का एक टिश्यू पेपर, डीमार्ट में 20 रुपीज का मिलता है. ओवर प्राइस आइटम. एक साइकिल जो अपन स्पोर्ट्स वालों को क्या होता है, द कंट्री विच इज होस्टिंग the sports has to provide all the amenities and all. तो एक जो साइकिल होता है वो नॉर्मल जो एथलेटिक साइकिल आता है वो 1.5 lakhs to 2.5 lakhs के या 3 lakhs के अंदर आ जाता है. 20 lakhs की बिलिंग. Who did it? सुरेश कलमाड़ी. He got it imported from Germany, Italy, France. वहां से साइकिल लिया और ओवर प्राइस बिल करवाया. गवर्नमेंट को क्या बोला कि 83,000 करोड़ का बिल हुआ. एक्चुअल बिलिंग 17,000 करोड़ की थी. एक सिंगल हैंडेडली उसने 60,000 करोड़ का फ्रॉड किया. सिंगल हैंडेडली. मतलब डेयर देखो बंदे का, 60,000 करोड़. आने वाली 60 generations will be very much happy without doing any work. They can survive. Are you getting it? सर इतना पैसा, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना पैसा एक बंदे के हाथ में था, just because he was given the authority. And when you make the abuse of your dominant position, this is called fraud. What do you mean by abuse? Use or misuse? Misuse. तो बिग बिग कंपनीज अल्टीमेटली लीव्स इनटू बिग बिग कॉर्पोरेट फ्रॉड्स. तो बेसिकली ये सिर्फ कहानियां चल रही हैं अभी, तो मेन कंटेंट बाद में आएगा. व्हाई डू द कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हैपन? रीड द पॉइंट नंबर 1. डिजायर और परसीव नीड टू अट्रैक्ट और रिटेन व्हाट? भाई हम लोग बोलते हैं ना एलिफेंट टीथ दिखाने के. तो यू हैव टू शो द एलिफेंट टीथ टू द आउटसाइड वर्ल्ड, देन ओनली द बैंकर्स एंड इन्वेस्टर्स विल गेट व्हाट? अट्रैक्टेड. तो यू आर अंडर अ मॉरल प्रेशर to show them the high profits, and due to the pressure you ultimately end up committing what? Fraud. So can I call it as an FRF? What is FRF? Fraud risk factor. ये कौन सा FRF है? सोच के देखो. read the whole sentence and tell me, is it opportunity, is it pressure, or is it rationalization? Pressure. What is the pressure? You have the perceived need to attract or retain what? Investors. Now see,
Corporate fraud commonly occurs for the same reason as any other fraud happens. However, amid the highly competitive global business environment of the modern world, it may also occur for other reasons. Many corporate fraud schemes consist of fraudulent accounting schemes used to make a money appear more profitable than it is. The impetus behind such scheme is the desire or perceived need to attract what? Retain investor. What is the second reason? Problems or defects with what? Company's product. अभी मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. जैसे से फॉर एग्जांपल योर मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट इज आउट ऑफ द मार्केट. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी 10 प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 60% रेवेन्यू देता है एंड रिमेनिंग योर 9 प्रोडक्ट्स आर गिविंग यू व्हाट 40%. ये प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट हो गया, मतलब कंपनी ने गवर्नमेंट ने बैन कर दिया. अब मेरे को बताओ, इज इट अ बिगेस्ट ब्लो टू द ऑर्गेनाइजेशन? Suddenly it means what you learn from this mistake, you should not be too much dependent upon a single product. Are you getting it? That is actually a weakness of an organization. हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, बट व्हाट इफ दैट प्रोडक्ट विल बी इमीडिएटली डिसकंटिन्यूड बाय द ऑर्डर्स ऑफ होम गवर्नमेंट? योर मेजर रेवेन्यू लॉस विल बी देयर and ultimately you will have to file your what? Bankruptcy. That is what the second point. What is the second point? Problems or defects with what? That is the same thing happened with Nokia. अगर आप केयरफुली उसकी देखो ना, नोकिया की केस स्टडी में you know that Nokia ruled the market like anything for 25 to 30 years. Who was the supreme? Nokia. Are you getting the point? What is the reason that today Apple and Samsung is there and Nokia is nowhere, not even a 0.01% market? The reason being very simple. When we asked this same thing to the CEO of the Nokia, you know what he said? Kete said, ki sir, we didn't do anything wrong. But the problem is we didn't do anything. समझ रहे हो? हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं, इसलिए नो किया. हमने कुछ किया ही नहीं, इसीलिए देखो, when Samsung and Apple were coming in the market, Nokia was a dominant player. वो आराम से बैठा हुआ ऊपर डोमिनेंट सीट पे. भाई मेरे को कोई नहीं कुछ बोल सके, मेरी स्नेक सबको पसंद है. Am I correct or not? I am giving you the easiest lock and unlock. Star hash star. Am I correct? कलर्ड स्क्रीन में तो उन्होंने टच स्क्रीन निकालना को, तब भी नोकिया को कोई फर्क नहीं. फिर डबल सिम आए, फिर चाइनीज फोन आए, देन स्लोली नोकिया फेल डाउन व्हेन द एंड्रॉइड केम इन द मार्केट. व्हाट केम इन द मार्केट? एंड दैट कैन बी यूज्ड इन एनी अदर डिवाइस. तो आपके पास ऑप्शंस आनी शुरू हुई. तो आप क्यों वो बटन वाला मोबाइल लोगे व्हेन यू कैन बाय अ व्हाट इज द सेम अमाउंट ऑफ टच स्क्रीन? आप अभी सैमसंग में जाओ, 6000 से लेके 1.5 लाख तक आपको मोबाइल मिलते हैं. कोई भी रेंज बोल दो, एनी इन बिटवीन रेंज यू विल गेट अ मोबाइल. आयु एप्पल सुपीरियर क्यों है? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए सुपीरियर. बिजनेस क्लास फोन है, उसकी वो क्वालिटी है. अब नोकिया की कोई यूएसपी नहीं है, क्योंकि द यूएसपीज आर नाउ बीन टेकन अवे. वन बाय होम एप्पल, सुपीरियरिटी इन लुक्स, एंड वन बाय होम Samsung, quality in cameras and all. Are you getting the point? अब नोकिया एंटर करता है मार्केट में, एंटर होने की ओप्पो वीवो मार देते हैं उसकी. Are you getting? ओप्पो उसके जैसा बना देता है. Are you getting? अब नोकिया से ज्यादा तो किसका मार्केट शेयर है? ओप्पो वीवो का ही मार्केट शेयर. ऑनर, ओप्पो, वीवो, लावा, माइक्रोमैक्स, ये वो सब चलते रहते. बट हु इज द सुप्रीम राइट नाउ? सैमसंग एंड आईफोन. अब इनको अगर अनसीट करना है तो ही हैज टू गो फॉर अ यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्लॉइंट. And that is very difficult. This is the reason sometimes when you forget that कि your products can also be defective. क्योंकि simple rule है sir, if you are not updated, you are outdated, and outdated is equal to obsolete. ये हमेशा रूल याद रखना. आपको आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड भी एक ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूं, नेवर स्टॉप लर्निंग. पढ़ते जाना. जो भी मार्केट में आपको लग रहा है ना कि इफ यू कैन स्मेल दैट कि समथिंग इज बिकमिंग वेरी ह्यूज इन द मार्केट, तो गो इनटू दैट प्रोफेशन. इसीलिए मैंने अभी तक 11 डिग्रीज करी है, क्योंकि आई न्यू दैट कि डूइंग वन इज नॉट गोइंग टू बी इनफ. आपको बहुत सारा आगे पढ़ना पड़ेगा. अब जैसे सडनली मान लो मैक्सिमम सर अनदर 2-3 years, नॉट मोर देन दैट, थ्रोट विल नॉट अलाउ. अभी क्या है, अब उम्र भी हो रही है, 35-36 हो रही है, मैक्सिमम 40. उसके बाद थ्रोट विल नॉट अलाउ यू, एंड द बॉडी विल नॉट अलाउ यू टू टेक 10 hours 14 hours ऑफ क्लासेस, और फैमिली को भी टाइम देना है. तो उस टाइम पे आपकी प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज शुड चेंज. और उस टाइम पे आपका सर्वाइवल इज नथिंग बट योर कॉम्पिटेंसी. इसलिए स्किल्स आर नाउ डेज टेकिंग ओवर द क्वालिफिकेशन. सर आपसे ज्यादा एक पानीपुरी वाला कमा लेता है. कैसे?
वो दिन में 300 प्लेट बेचता है 220 रुपए की, 6,000 रुपए दिन का प्रॉफिट, 1,80,000 रुपए मंथली बनाता है, ठीक है ना, और 50% उसका मार्जिन है, मिनिमम नहीं तो 90,000 रुपीज कमा रहा हूं मंथली। तो क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर, स्किल मैटर्स। क्या मैटर करता है? स्किल। तो कभी भी याद रखना, ये 3 इंडस्ट्री में घुसना हमेशा, हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड। यू विल नेवर बी एबल टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग एनीथिंग। ईटिंग मतलब जंक, यू विल डेफिनेटली गो टू हॉस्पिटल। हेल्थ, एजुकेशन, यू विल नॉट अलाउ योर चिल्ड्रन टू गेट अनएजुकेटेड। तो ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें आपको आपका करियर बनाना चाहिए, इसलिए आई चोज एजुकेशन एंड नाउ प्रैक्टिस एज वेल। डिड यू गेट द पॉइंट? तो आपको ना प्रायोरिटी सेट करने पड़ेंगे, मल्टीपल सोर्सेज, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू विल बी फेडेड आउट ऑफ द मार्केट। आई वाज इन डिप्रेशन फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 months व्हेन दिस कोविड हैपेंड, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, because when the COVID happened on 23rd March, I had to refund almost 21 lakhs out of my pocket to all my 6 batches which were running. Almost 1150 students थे मेरे पास उस टाइम पे, सबको रिफंड किया मैंने। जस्ट 1 month के क्लासेस बाकी थे, 1 month ऑलरेडी हो गया था, 50% मनी रिफंड किया। कईयों को तो 100% करना पड़ा, क्योंकि मई में एग्जाम है, लॉकडाउन लग गया, जो अप्रैल में खत्म होना था अब वो पता ही नहीं है लॉकडाउन कब खत्म होगा। उस टाइम पे मेरी पॉकेट से मैंने 21 लाख रुपीस दिए थे। दैट वाज द बिगेस्ट डिप्रेसिंग पॉइंट। तब हम लोग गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में नहीं थे। फिर सडनली मेरे को अनअकैडमी से ऑफर आया, तो मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया। देन आई लॉस्ट माई द फियर ऑफ फेसिंग द कैमरा। फिर मैंने अनअकैडमी में 2 साल काम किया। अनअकैडमी के साथ साथ मैंने लक्ष्य में हमने CMA स्टार्ट किया 2020 जून में we started the first batch of CMA inter here. फिर हमने CMA final, that is how we progressed in the last 2 years. अभी आज क्या मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा monthly 40 to 50 Google Drive classes are also getting sold. So उसमें क्या था, आपके पास multiple revenue. The time teaches you the lesson. You have to adapt according to the requirements of the society. आज के टाइम पे मेरी 2 तरह की population है, जो face to face attend करती है मेरे को, and the one who would not be able to attend, like in the south. They will be buying my Google Drive. And fortunately, I am one of the faculties in South India who always takes the complete lecture in English. English speaking lectures नहीं मिलते आपको. Either they will take in Telugu or Tamil and all those things. So Chennai and Karnataka is my main hub where my classes are getting sold. Are you getting the point? क्योंकि most of the popular, आप देख लो, आप CMA में YouTube पे चल के देख लो, आपको सचिन जैन दिखेंगे, एक मोहित अग्रवाल क्लासेस दिखेंगे. They all are taking classes in what? Hindi. Some people are not comfortable. तो दैट इज द रीजन इन साउथ द मार्केट इज अनटच्ड। आपको R&D करनी पड़ती है कि इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस एरिया, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू ब्रिंग इन द मार्केट व्हिच इज नॉट सफिशिएंट इन द मार्केट। तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप ऑन अपडेटेड। डेयर यू नॉट अपडेट योर डिफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, you will be out of the market and you will be under immense pressure to do what? Fraud. Next one, government regulatory authorities, that is Security Exchange Board of India and Securities and Exchange Commission in United States, use the laws and regulations to try, prevent, detect and punish corporate frauds. जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, इंडिया में अपना आता है एक LODR. इंडिया में we have LODR, Listing Obligations Disclosure Requirement. What is the full form? एक्चुअली ये रीसेंट नेम है, अर्लियर इट वाज नोन एज क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट। इसे हम लोग क्लॉज 49 लिस्टिंग बोलते थे, बट नाउ रिसेंटली चेंज टू LODR। ये हमने कहां से कॉपी किया है? ये हमने यूएस से कॉपी किया है। यूएस में एक एक्ट है सॉक्स एक्ट 2002, सॉक्स इसे बोलते हैं सर्बेन्स ऑक्सली एक्ट 2002। एक्चुअली इंडिया के मोस्ट ऑफ द जो फ्रॉड रिलेटेड लॉज हैं, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सारे यूएस से कॉपीड है, क्योंकि इंडिया का सेबी और यूएस का सेक, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, आर इन ट्रीटी विद ईच अदर। क्योंकि सत्यम कंप्यूटर्स वाज द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया व्हिच गॉट लिस्टेड इन NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट से अपने को पता चला था कि सत्यम में स्कैम हो रहा है, लाइक व्हाट वी हैव रेज्ड रिसेंटली अंडरस्टूड फ्रॉम अदानी। अदानी का जो हिंदरबर्ग रिपोर्ट है वो भी कहां से आई है? यूएस से ही तो आई है, कि उसमें इन हाउस बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। दैट इज द रीजन 40% शेयर्स ऑफ द अदानी हैव फॉलन डाउन इन द लास्ट 1 month। ऑलमोस्ट 40% डाउन चल रहा है अदानी, एंड इट विल गेट डाउन। डेली मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी जा रही है, बट अदानी इज गोइंग डाउन। बट
बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. व्हाट आई एम सेइंग दैट कि ये ट्रीटीज होती हैं. दीज आर द वेरियस थिंग्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स एंड एरर्स. तो ये एग्जांपल याद रख लेना. सॉक्स एक्ट. व्हाट इज अ सॉक्स? सर्बेन्स ऑक्सली एक्ट. मैं तुम्हें लिखवाऊंगा एग्जांपल में. इट इज नोन एज सर्बेन्स ऑक्सली एक्ट 2002. यहीं से हमने कॉपी किया LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर. अब आपको एक वर्ड याद होगा मेरे ख्याल से, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, इनसाइडर ट्रेडिंग. एनीबॉडी नोस क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग? When you make a leakage of the unsensitive, price sensitive information, unpublished price sensitive information, then you will be falling the prey to the penalty of insider trading, जिसमें आपको 7 years की जेल and 5 times the profit made, whichever is higher, is going to be penalized on you. उसका रूल पता क्या है? कि when you are a listed company, within the 15 minutes of the conclusion of the meeting, the decision first should be told to SEBI. It should not be published. Once SEBI will publish it on the website, after that it should be given to the newspaper agency. Let's say for example I am sitting in that meeting. मेरे को एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पता चल गई. मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, भाई कंपनी के 10 करोड़ के शेयर खरीद ले. और वो 10 करोड़ के शेयर नेक्स्ट डे 20 करोड़ हो गए. हाउ मच प्रॉफिट आई मेड? 10 करोड़ इनटू 5 टाइम्स विल बी माय पेनल्टी. उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. सेबी का तो और भी रूल है. मिनिमम 25 करोड़ और 10 टाइम्स द प्रॉफिट मेड एंड जेल ऑफ 10 years. ये सारे रूल्स क्यों बनाए गए? टू कर्व द स्कैम्स एंड स्कैंडल्स. एंड दैट्स द रीजन यू माइट हैव सीन दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा, आपने कंपनी लॉ किया, पृथ्वी सर ने करवाया. यू कैन सी दैट आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन वायलेशन पे पेनल्टी है. तो मेरे ख्याल से कंपनी लॉ इंस्टेड ऑफ सिविल लॉ, slowly it is becoming criminal law. And along with penalty, they are adding imprisonment word also. Minimum 6 months, maximum 10 years, like that, everywhere it is being added. That is the second reason. What is the third reason of doing the fraud? Major fraud cases in the world. What is the first major fraud? Enron Company. Actually, this is the father of all the frauds. यहां से मतलब he has given the birth to the scams and scandal. फिर एक Xerox Corp आता है, फिर अपने इंडिया का सत्यम स्कैम आता है. Enron Company. One of the most notorious case of corporate fraud is Enron scandal. At its height, Enron, a major energy company, was raking in billions upon billions in profit. However, when the company began to face declining revenues and debt troubles, company executive hid the facts through the massive accounting fraud. और इसमें auditors भी involved थे. In the end, both Enron and its accounting firm, what is the name? Arthur Andersen, went under. Thousands of employees lost their jobs, and Enron creditors and investors lost what? Billions. Enron accounting scandal is credited with resulting in passage of Sarbanes-Oxley Act. This one I was telling you just now, SOX Act, which require more transparency in companies' financial reporting and impose significantly harsher penalties and any company caught for committing the fraud. Second is waste management fraud. Waste management, the largest garbage and recyclable collector in United States, appeared to be one of the most financially sound companies in US in the early 90s. Investors eagerly bought up company stock, driving its price steadily higher. Due to the profitable, people started buying the shares and share price went up. However, when a new chief executive officer assumed the position in what? 1998, he eventually discovered that, like Enron, waste management previously perpetrated a multi-dollar accounting fraud in an attempt to pump up its profitability numbers. Unlike Enron, waste management was able, under its new leadership, to survive the resulting scandal, penalties from the security exchange, and multi-million-dollar lawsuit by whom? Investor. फिर what is the third name? तुम्हें सिर्फ नाम याद करने हैं. Reading it, I am just for your curiosity कि what kind of fraud has happened. So what they are trying to tell in the waste management? कि waste management scandal was also like a Enron, but it was still able to handle the penalties which were given by the Security Exchange Commission. So it was able to continue, unlike Enron, which got what? Wound up. What is the third scam? ZZZZ Best Company. The story of ZZZZ Best, a carpet cleaning company founded by a 15 years old, is a rags to riches to rags story. It's a rags to riches to rags story. Within 6 years of company's founding, entrepreneur owner was able to take company public with a valuation of approximately $300 million. This was just one problem. Barry Minko, the founder and the owner of ZZZ Best, had made up of a thin air
practically all of the company's alleged customers. Minko was keeping the companies afloat by using money required for new investors to pay off what previous investors, in short, engaging in a classic Ponzi scheme before Minko could generate enough business to cover his fraud tracks and hopefully write the company's finances. His fraud scheme was discovered. मतलब क्या करता था वो न्यू इन्वेस्टर से पैसा उठाता था और ओल्ड इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देता था so that old investors will remain calm. Again he will go for a new FPO. What is FPO? Further public offer. वहां से पैसा उठाता था सेकंड वाले को. Like yesterday I told you, teaming and leading, where the one party's deficiency will be met by the another party. The result was that at best once an inspiring success story went completely bust just a few months after the company's initial public offer. What is the next fraud? Wirecard company. One of the most recent corporate frauds 2020 में हुआ is that Wirecard, a payment transfer and processing company in Germany. In early 2020, accounting auditors discovered 2 billion discrepancy between company's books and actual money it held. Like many corporate fraud schemes, Wirecard cooking off its books has been going on for several years. Before it was detected, Wirecard was forced to declare what? Bankruptcy. Basically, Wirecard company होती क्या है? अच्छा मेरे को ये बताओ, जब आपका एटीएम या क्रेडिट कार्ड या कुछ भी बैंक में प्रॉब्लम होती है, डू यू कॉल कस्टमर केयर? तो वो कस्टमर केयर बैंक एम्प्लॉय होता है? नहीं, कस्टमर केयर इज अ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स. वो एक कंपनी है जिसने बैंक का कस्टमर केयर के ऑपरेशंस लिए हुए हैं और आपका सारा डेटा उनके पास होता है. इवन की योर ओटीपी, इवन की योर सीवीवी नंबर and even key your PIN number is always there with them. But the code of confidentiality between the bank and the BPO is so big that they will not think of doing the what? Fraud. But some of the people sell your data to the other company. That's how you get these many calls, sometimes in the form of spam. कभी बजाज फाइनेंस से कॉल आती है, कभी मुथूट फाइनेंस से कॉल आती है, सर ये लोन ले लो, वो लोन ले लो. आया सीधा सामने मेरे को लोन दे दो, दारू पीनी है बोल दो, और सामने से कॉल करने बंद कर देंगे. भाई बिलीव नहीं करोगे, डेली कम से कम नहीं तो 20 to 30 नंबर्स आई डू ब्लॉक, बट स्टिल नेक्स्ट डे अनदर 30 कम्स. इतना ज्यादा स्कैम एंड स्कैंडल हो रहा है. फिशिंग मेल्स एंड फिशिंग कॉल्स, एवरीथिंग इज फिशिंग, राइट. नेक्स्ट वन इज विच फ्रॉड? वेल्स फार्गो. तो फ्रॉड केस ऑफ वेल्स फार्गो रिवील्ड द डेंजर ऑफ कंपनीज पुटिंग हाई प्रेशर सेल्स कोटास ऑन व्हाट? Employees. The result of such practice at Wells Fargo Bank led hundreds of its employees to open fake accounts for what? ये वही हो गया जो मार्केटिंग कंपनी करती है ना, they put a pressure on their sales employees कि भैया तुम्हारा टारगेट अभी 1 लाख यूनिट नहीं 5 लाख यूनिट्स है. And what did they do? In the order to impress and get the more commission, they opened the which accounts? Fake accounts for the Wells Fargo clients. Short-term profits went up by millions, but when the widespread fraud was uncovered, banks' fine imposed by SEC was ran into what? Billions. In addition, bank lost what? Hundreds, if not thousands of what? Client. Obviously, सबसे बड़े बैंक का सबसे बड़ा मेन चीज क्या होती है? अपन बैंक में पैसा क्यों सबमिट करते हैं? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. और तुम्हें मालूम है आपका पैसा तो बैंक में भी सेफ नहीं है. हैव यू हर्ड ऑफ DICGC? ये कभी सुना है कि अगर मान लो द बैंक में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी आरबीआई की गाइडलाइन आई परसों, द डे बिफोर यस्टरडे, सपोज यू हैव ओपन अ बैंक लॉकर इन अ आरबीआई, तो यू हैव टू एंटर, आरबीआई नहीं सॉरी बैंक में, तो यू हैव टू एंटर वन नाउ एग्रीमेंट विद द बैंक मैनेजर कि व्हाट यू आर कीपिंग इट इनसाइड. इफ यू डू नॉट डिस्क्लोज व्हाट यू आर कीपिंग इट इनसाइड, वो भी आपकी वॉलंटरी ऑप्शन है. You have an option to disclose, you have an option not to disclose. But if you do not disclose and the bank में चोरी हो जाती है या फायर लग जाता है, बैंक won't be giving you even a single rupee, क्योंकि बैंक did not know what is inside. Did you get the point? और अगर आपने बताया कि what is inside, मान लो मैंने उनको बताया मेरी वहां पे 10 lakhs की ज्वेलरी पड़ी है, तो लॉकर रेंट इनटू 100 टाइम्स इज द कॉम्पनसेशन यू विल गेट. तो लॉकर रेंट होता है 850 इनटू व्हाट? 100 टाइम्स. तो ऑलमोस्ट 8,85,000 रुपीज का आपको सिर्फ कॉम्पनसेशन मिलेगा, इवन इफ यू लॉस्ट योर ज्वेलरी बाय व्हाट? 10 lakhs. अब मेरे को बताओ बैंक्स में भी सेफ है? नहीं है. चोरी होगी कुछ भी. और बैंक में अगर मान लो आपके बैंक अकाउंट में 4 CR है और बैंक में चोरी होगी और बैंक हो गया इंसॉल्वेंट,
तो इन केस में यू विल ओनली बी कवर्ड अप टू 1 लाख, आपको सिर्फ 1 लाख का इंश्योरेंस है। डिड यू गेट द पॉइंट? तो हम लोग सोचते हैं कि बैंक में एवरीथिंग इज सिक्योर्ड, नथिंग इज सिक्योर्ड। इसलिए कभी भी इफ यू आर कीपिंग योर मनी इन द बैंक, यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक, रादर इन्वेस्ट योर मनी। ठीक है ना? तो जनरल रूल अपना क्या होता है? फर्स्ट वी स्पेंड एंड देन वी व्हाट? इन्वेस्ट। रूल शुड बी वाइस वर्सा, फर्स्ट एंड देन व्हाट? स्पेंड। अगर आपको रैक्स टू रिचेस से रैक्स नहीं बनना है तो यू हैव टू फॉलो दिस। डिड यू गेट इट? तो नेवर एवर कीप द मनी आइडल इन योर बैंक, हमेशा उसको क्या करो? इन्वेस्ट। गोल्ड खरीद के रख लो, प्रॉपर्टीज खरीद लो, व्हाई यू कीप द मनी इन द बैंक? आइडल मनी फेचेस यू नथिंग। और आधे लोगों को तो आपको वो ऑटो स्वीप की फैसिलिटी पता है? ऑटो स्वीप। अब जैसे मेरे बैंक है, मेरे को 10 लाख की पेमेंट आई, मैंने ऑटो स्वीप लगाया हुआ। व्हाट इज ऑटो स्वीप? कि 10,000 से ऊपर जितना भी बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली एफडी में चले जाता है। आई डू नॉट हैव टू क्रिएट इट, एंड व्हेनेवर आई विल विड्रॉ इट विल ब्रेक, and after break if it is again more than 10,000 balance, it will automatically go to what? FD. I don't have to do it again and again, और मेरे को 3.5% की जगह 6.6% इंटरेस्ट मिलता है, ऑलमोस्ट डबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो उसे बोलते हैं ऑटो स्वीप, मतलब आपको एफडी करने की जरूरत नहीं है, यू हैव पुट एन ऑप्शन, ऑटोमेटिकली एनीथिंग अबव 10,000 विल गो इनटू एफडी। अब मेरे को मान लो इमरजेंसी है, तो ऑन द स्पॉट आई कैन विड्रॉ 50,000। Even if my account is showing only 10,000, I can withdraw about 50,000. FD will automatically break. और जितना भी इंटरेस्ट हुआ 4-5 months का, that will be credited. But again, if I'll put some extra balance, automatically it will go into what? FD. हर एक सेविंग्स अकाउंट में ये ऑप्शन होती है, ऑटो स्वीप बोलते हैं उसे। What do we call it as? आप अपने बैंक ब्रांच में जाओ, उनको बोलो मेरा ऑटो स्वीप एक्टिवेट कर दो, और एक लिमिट सेट कर दो कि द मोमेंट इट इज मोर देन 20, it should be FD. If you want more than 20, you can withdraw. मतलब it is a liquid FD. What do we call it as? But इसमें ये प्रॉब्लम है कि TDS will be deducted on the interest. But that you can claim by filing your which return? Income tax return. With that, our topic of forensic audit is over. What is the topic over? Forensic audit. And I already told you yesterday why we are doing it from the material. क्योंकि sometimes क्या होता है, जैसे ऑथर बुक हम लोग लेते हैं ना, उससे क्या होता है कि ऑथर लोग कई बार सिर्फ ये नेम्स देते हैं कि ये फ्रॉड हुआ, ये फ्रॉड हुआ, ये फ्रॉड हुआ, क्योंकि ऑथर लोग कॉन्सेंट्रेट क्या करते हैं कि व्हाट दे वांट यू टू टेल, व्हाट दे वांट टू टेल यू, एज सिंपल एज दैट। तो एक बार अगर हमने मटेरियल गो थ्रू कर लिया ना, तो इट विल लुक लाइक कि यस यू नो एवरीथिंग व्हाट इज देयर इनसाइड द मटेरियल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फर्दर। स्टार्ट राइटिंग, वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। FRM, व्हाट इज FRM? फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद अपना मेरे ख्याल से मनी लॉन्ड्रिंग आएगा, फाइनेंशियल फोरेंसिक्स एंड फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स। और मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है? एथिकल कंसिडरेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट इन फोरेंसिक सेम होंगे अपने। व्हाट इज एथिकल रिक्वायरमेंट्स वी हैव? सेम इसमें भी है, सेम। एंड देन मनी लॉन्ड्रिंग, इसको मतलब अपने को लगेगा 4-5 days लगेंगे, बट दीज 2 chapters of 10 marks will be over. So your professional ethics is already over, cost audit is already over, and basics of company audit is already over. Cost auditing standards are over, and we'll be done with the. This is the new topic. That's why I thought that I should tell you first. Why? Because most of the times when we do it at the end, we leave it in choice. So I think forensic audit is not that bad topic to be retained. कहाँ तक लिखा था हमने last topic? हाँ? Need for forensic audit. नीड यहीं तक लिखा आपने? ओके, पुट द हेडिंग फोरेंसिक ऑडिट प्रोसेस, फोरेंसिक ऑडिट प्रोसीजर, फोरेंसिक ऑडिट प्रोसीजर। अंडर दैट राइट, it is more of investigation and collection of evidence. It is more of investigation. It is more of investigation and collection of evidences. It is more of investigation and collection of evidences with attitude of professional skepticism. With attitude of professional skepticism.
the procedures under the forensic audit, the procedures under the forensic audit, next point, the procedures under the forensic audit are known as forensic data analysis, are known as forensic data analysis and fraud investigation techniques. Fraud investigating techniques. Next point. Fraud investigating techniques. Next point. But most commonly, next point, most commonly used tool known as triangle. इसको inverted में लिखना. Most commonly used tool known as triangle is three element tool. अब इसको ये पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये थर्ड वाले लाइन को, मोस्ट वाली पूरी लाइन को, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करो and write the FRFs which I told you. What is the first FRF? Pressure. Put the heading pressure or incentives. The first one is pressure or incentives. Pressures or incentives. Second one, attitude or rationalization. Third one, opportunity. First one, pressures or incentives. Second one, attitude or rationalization. Third one, under the pressures, right? Circumstances which pushes or motives which pushes a person to commit a fraud. Circumstances or motives which pushes a person to commit a fraud. Second, what is the second one? Right. When a person already knows that it's a dishonest act. When a person already knows that it's a dishonest act, but still does it. आपको already पता है कि what you are doing is dishonest, but you are still doing it. And what is the last one? When you know the flaws and weaknesses in the system. When you know the flaws and weaknesses in the system. Clear? जब आपको मालूम है कि what are the weaknesses and flaws, but you still don't tell it to anybody. You would like to commit something. It means you saw an opportunity in that. So this is known as fraud, forensic audit procedures. Next one, put the heading. Investigation methodology of forensic audit. 9 steps. Investigation methodology of forensic audit. Under that, right? It's a 9-step method. It's a 9-step method for fact findings.
It's a 9-step method for fact findings. So what do we start our forensic audit with first? Accept the which letter? Engagement letter. So point number 1, accept the engagement, accept the forensic audit engagement. It's a 9-step method for fact findings. First one, accept the forensic audit engagement. Next, evaluate suspicions or allegations. Evaluate suspicions or allegations. Suspicions or allegations. Conduct background check by due diligence. Conduct background check. Conduct background check by due diligence. Background check by due diligence. Next, complete preliminary stage of investigation. Complete preliminary stage of investigation. Next, assume a prediction that there will be a litigation. Assume a prediction. Assume a prediction that there will be a litigation. सोच के चलो कि केस होगा ही होगा, because you know that कि after collecting the evidences you have to also present in the which gatherings? Court gatherings, court proceedings में आपको attend करना. Assume that there will be a litigation. How many steps? 5, 6. Now begin with external investigation. Now begin with external investigation. Bracket में write, collect conclusive evidences. I hope you know we are not based upon persuasive. We go for conclusive. क्या sentence लिखा हमने? Now begin external investigations. Collect conclusive evidences. Next, carry out analysis on the evidences collected. Carry out analysis on the evidences collected. So what you have collected उसको analyze करो. And what do we do? Do we report it? All right. Prepare report on findings. Carry out analysis on evidences collected. Next one, prepare report on findings. And the last one, attend court proceedings as an expert witness. Attend court proceedings as an expert witness. You will be going there as an expert witness, right? Now, next heading, अब तो छोटे छोटे headings ही हैं. Common areas of fraud. Common areas of fraud in forensic audit. Common areas of fraud in forensic audit. Under that, misappropriation of assets. Misappropriation of assets. Extortion. Extortion. Misappropriation of assets. एक्सटॉर्शन मतलब वो अपन किसी को किडनैप करके पैसे मांगते ना, और क्या बोलते हैं, नहीं, सेफ्टी मतलब कंपल्सरी सेफ्टी देना. मतलब आई एम अ गुंडा इन अ एरिया एंड यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो आई एम टेलिंग यू दैट यू गिव मी द मनी एंड नो वन विल टच योर बिजनेस, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू टू डू द बिजनेस इन योर एरिया प्रॉपरली. आयो, अरे वो एक्सटॉर्शन बोलते ना, हफ्ता लेना. वो एक्सटॉर्शन वो भी होता है जब व्हेन वी किडनैप समबडी
and we demand the money in return of the release. That is called extortion. Right or not? नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली फोरेंसिक ऑडिट में एक्सटॉर्शन कैसे होता है, नाउ लिसन. अब जैसे से फॉर एग्जांपल आई एम सीईओ ऑफ द कंपनी, अब मेरे पास कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन मेरे पास है और मैंने वो पूरे सेंट्रल सर्वर से डिलीट करके आई पुट इट इन वन हार्ड डिस्क एंड आई एम हैविंग द हार्ड डिस्क एंड आई एम टेलिंग द बॉस, द चेयरमैन, कि you pay me the money else I will leak your confidential information. That is called what? Extortion. That is also one of the fraud, right? Extortion. First one क्या लिखा था? Second extortion. Next corruption. Corruption. Next FFR, fraudulent financial reporting. जैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, if you are comfortable you can write this FSF also or FFR, any of the thing you can write, fraudulent financial reporting or fraudulent financial statements, FFS. And last one, conflict of interest. Conflict of interest. Next one, put the heading, business frauds or corporate frauds and why do they happen. Put the heading. अपन क्लब करेंगे दोनों पार्ट्स को, बिजनेस फ्रॉड्स और कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, बिजनेस फ्रॉड्स और कॉर्पोरेट फ्रॉड्स एंड व्हाई डू दे हैपन. व्हाई डू दे हैपन. पहले लिखो मीनिंग. Corporate or business frauds, under the meaning, right? Point number 1. Corporate or business frauds consist of, corporate or business frauds consist of illegal, unethical and deceptive actions. Illegal, unethical and deceptive actions committed by the company, or by a person working in the company. Committed by the company or by a person working in the company. In the company, right? Next point, point number 2. It is carried out in such a planned and logical manner. Second point, it is carried out in such a planned and logical manner. It is carried out in such a planned and logical manner that an office, that ये वाला पूरा लाइन लिखो, that an office full of forensic accountants, an office full of forensic accountants months, full of forensic accountants months is required to detect such corporate fraud. Now read the whole sentence. Now you will learn what I made you write. Read the second sentence. It is carried out in such a planned and logical manner that it requires a office full of forensic accountants months required to detect what? To detect the corporate fraud, right? Next point. The third point. The victims are consumers. Victims are consumers, clients. Victims are consumers, clients, creditors, investors,
and other businesses. Consumer, clients, creditors, investors, and other businesses, and ultimately results into bankruptcy. And ultimately results into bankruptcy. Clear? Ultimately results into bankruptcy. Right? Now, ये हो गया अपना meaning. Now put the heading. Why do they happen? Why do they happen? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. Why do they happen? Underline that and divide it into 3 parts. ये कॉर्पोरेट स्कैम क्यों होते हैं? रीजन नंबर 1, ये लिख लो फर्स्ट लाइन. द डिजायर or perceived need to attract and retain investors. The desire or perceived need to attract or retain investors. Second one, write this. Problems or defects with the company's products. Problems and defects with the company's products. And third, inspiration from the major corporate frauds of the world. Inspiration from the major corporate frauds of the world. Inspiration. कौन कौन से नाम याद है? ZZZ, वर्ल्ड, वेल्स फार्गो, एनरॉन, सत्यम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. इंडिया शुड ऑल्सो बी ऑन द लिस्ट, राइट? तो क्या लिखा है? इंस्पिरेशंस फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, corporate frauds of the world. Now, what is the first heading we have written? The desire or perceived need. Under that, right? It is generally done. It is generally done to make company appear more profitable than it is. It is generally done to make company appear more profitable than it is, and to attract and retain investors. And to attract and retain investors. To company appear more profitable than it is, and to attract and retain investors. ये हो गया इसका रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2, there may be problems or defects with the company's products. There may be problem or defects. There may be problems or defects with the company's products. With the company's products, which they try to hide. There may be problems and defects with the company's products which they try to hide, comma, generally found in pharma sector. Pharma sector में आपको पता है कि so much of the medicines and vaccinations will be produced in abundant, and you know that medicines do have the expiry date, and you know, to take out their inventory out in the market, they will keep on changing the labeling. It means selling the expired medicines in the label of what? Unexpired one, by changing the date of manufacturing and the date of what? Expiry. And ultimately, who is the sufferer? Consumer is the sufferer. So this is the second point we are writing. And third mein, just write the names. Inspirations from the, under that, right? Inspirations from the international corporate scams, like inspirations from the international corporate scams, like under that A point. Under that A point, पहले ये नाम लिख लो, एनरॉन कंपनी,
अंडर दैट ए पॉइंट एनरॉन कंपनी, इसको हाइफन डाल के लिखो, द बिगेस्ट अकाउंटिंग फ्रॉड, बिगेस्ट अकाउंटिंग फ्रॉड, ब्रैकेट में यूएस, ब्रैकेट में लिख लो यूएस, ये यूएस में हुआ था, ठीक है। सेकंड बी, वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉड, अगेन ब्रैकेट में यूएस, 1990, थर्ड ZZZZ बेस्ट कंपनी, ZZZZ बेस्ट कंपनी, ब्रैकेट में कारपेट क्लीनिंग कंपनी, कारपेट क्लीनिंग कंपनी, ब्रैकेट $300 million, $300 million fraud. $300 million. Next one, Wirecard company, $2 billion. Wirecard company, $2 billion. Next one, Wells Fargo and company, ब्रैकेट में ओपन फेक अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स, वेल्स फार्गो, ये सारे यूएस के फ्रॉड्स हैं, वेल्स फार्गो एंड कंपनी ओपन फेक क्लाइंट अकाउंट्स, ठीक है। So this is what brings an end to your meaning of the term called what? Forensic audit. Forensic audit complete नहीं हुआ, but one term of the meaning called forensic audit is over. ठीक है, क्यों होता है forensic audit, कैसे होता है, methodology. अभी in the next few topics we are going to go a little bit deeper into it, like what are the steps of verification in forensic audit, how do you use the information technology, what are the techniques, methodologies, all those things we are going to अंडरस्टैंड। जैसे डेटा एनालिटिक्स होता है, डेटा माइनिंग होता है, ISO होता है, एंड देन वी हैव PACS, दीज आर द वेरियस टेक्निक्स व्हिच वी विल अंडरस्टैंड अंडर द फोरेंसिक ऑडिट। आज के लिए इतना बस है, कल अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, न्यू टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर।